Nine, Om Namah Shivaya. Good morning, Nayan ji. Uh, Good morning, everyone. So, welcome to today's pre-market analysis. So, let's start with yesterday. We were not able to conduct, so we will see an glimpse of what exactly we got yesterday. So, even though we had a good gap up, and after the gap up start, uh, the movement was pretty consolidated. If we see that over here, so when the market started from this particular point with a huge, at least a decent gap up yesterday. But after that, if you see that the opportunities were pretty less and only nearly, if you see, if from this nearly 40-50 points movement, and that too pretty consolidated. So the premium was kind of pretty, uh, premium movement was pretty less yesterday. So if you see on the India VIX part, it is also below 10 and the premium movements are pretty low compared to the other market days, yesterday especially. So we will start off with today's level. So we will mark off today's pivot levels and everything. So we are happily back to our 26,000 above level. So if you see that market is pretty above the level 26,000, so we will plan our trade and levels according to what closure we had on yesterday on the basis of high, low and closing. So I'll quickly start off with the levels. So if you see, the pivot point is back to 26,133. It is, we will mark it as 30 only. So with respect to yesterday's high, low and closing value, we have calculated the pivot point, which is simply high plus low plus closing whole divided by 3. We will get our number. So this, with respect to the pivot line, the support one lies at 26,085. So we are back again with the support line. The first support line above 26,000, which is the 26,085. We'll mark it as 90. 26,090. And the support 2 lies at 25,000. So 25,009, triple nine it is. So we'll mark it as 26,000 only, which is a psychology 20. Okay. And support 3 lies at 25,950. So it is pretty close. The levels are pretty close. 25,950. And with respect to the resistance part, if you see, 26,220 will be the first resistance, 26,220, and resistance 3, resistance 2 is 26,270. Resistance 3 is at 26,350. So these are the levels with respect to Nifty on the basis of pivot line, which we calculated on yesterday's closure. So we will mark off the levels over here first. So if you see this, this is pivot line, no, resistance 1, 26,220. 220 we will be marking the resistance, and pivot line lies at 26,130. 26,130 will be the pivot line, and we will mark the third support at 25,950. 25,950 will be the third support. So with respect to the bullish zone, if you see, it will be between R2 and R1, 26,270 and 350. 26,270 and 26,350. So this will be the new bullish zone for our with respect to the pivot line, if you see. And on the consolidation pad, it will be between S1 and R1, which is 2690 and 26,220. 2690 and 26,220. And on the bearish side,
it will be between support 1 and 2, and we will mark the support 3. We have already marked it separately. 2690 and 26,000 will be the merit zone. 2690 and 26,000. So these are the levels with respect to Nifty on the basis of pivot line, which we have already marked over here. So we will quickly move on to the Bank Nifty levels. So Bank Nifty also similarly had a good run yesterday, but on the premium wise, if you see, it was pretty less compared to the movement or the gap a bit created. So with respect to yesterday's movement, we are leveling up Bank Nifty with respect to the pivot line and the support and resistance. The pivot line lies at 59,277. So we'll mark it as 59,280. With respect to this, the support one lies at 59,185. We will mark it as 185 only. 59,185. Support 2 lies at 59,060. And support 3 lies at 58,970. So in this scenario also, the support resistance are pretty close. Nearly, if you see, nearly 100 points, nearly 90, 80 points in between the support and resistance, and if, with respect to the pivot line. So on resistance part, if you see, resistance 1 lies at 59,400 is the first resistance, and resistance 2 is at 59,493. We will mark it as 490 only. 59,490, and resistance 3 at 59,620. So these are the levels with respect to Bank Nifty. The pivot is at 59,280. And the resistance 1 is at 59,400. And the support 1 is at 59,185. So these are the levels with respect to Bank Nifty. If you see over here, it is closing above, the market is already trading above the pivot line. So if it is still sustaining above this level, either we can plan a bounce trade from this particular level, like in this way. In this way, either if it is opening anywhere between here, we will wait for a bounce back to here, and we can plan a trade to the R1. This is one of the method, or else if it is giving a proper breakdown, then we can validate that movement with respect to the volume supported by that, and we can go for a downside trade. So right now, as you can see, it is a bullish sentiment. So we will see how the openings are happening, pre-market opening, and we will plan accordingly. So we will move on to Sensex now. We will mark the Sensex levels. Sensex also had a great run yesterday on the consolidated only. On the premium wise, if you see, the movement was pretty less as compared to other days. It's not like that it didn't move at all. Compared to the other days, if you see, it was pretty consolidated. So pivot line of Sensex light is 85,440. 85,440 is where the pivot line comes for Sensex, and with respect to that, if you see, the support one lies at 85,275. 75 only will mark 80. 5 to 175, and support 2 is at 84,980, and support 3 is at 84,820. These are the three supports, and with respect to resistance, 85,730 will be the first resistance.
And with respect to that, and second resistance lies at R2 at 85,890. 5890, and R3 lies at 86,185. So these are the three levels with respect to the Sensex part. And we'll mark the resistance first, 85,730, and on the pivot line 85,440, and support one at 85,275. So here as well, it is trading above our pivot line for the day with respect to yesterday's high, low, and closing value. And if we see if it is sustaining above this level, definitely we are on the bullish side. So we can plan our trades with respect to these level. Either if we are getting a bounce back over here or a breakdown below this pivot line level, we can plan our trade with respect to these breakdown or breakout or sustainability above this line. So we can plan trade from as a bounce back from this level to the R1, or either if it is closing, if it is opening anywhere near to the R1 level, then definitely we can plan our trade with respect to these level, either from a reversal or a rejection from this level or a breakout. So we will wait for that first initial minute. Then we will go back to Nifty now. We still did a, we'll get our pre-market value now, pre-market opening value. So we'll have a quick look at FIA data. On 22nd December, if we see the all the trend is restarted again, where FIA started selling off and EA started buying it off. So if you see that nearly 4,000 crores have been added to the cash market by DIA, where FIA sold off nearly 500 crores. So if you see on the FIA specified FNO data, so it is net bullish only. So I expect a positive start. Oh yeah, we got our pre-market opening over here. It is opening near to our resistance one. So if I say that either we can wait for a breakout over here, or we can plan a rejection trade from this particular level. It completely depend upon how market reacting towards the opening after the opening. So if we see, we saw that our FIA on FNO data, if we see on the basis of FIA's FNO data, it is net bullish. So if it is sustaining, then definitely I go for the bullish plan. We can plan a trade from this breakout level to this our R2 and R3 respectively. Or if it is a rejection, then definitely we can plan a rejection trade from here, but we have to wait first 15 minutes for that rejection trade to be planned, and the volume need we should focus on the volume. If it is supported by the volume, then definitely we can go for that rejection trade from this particular resistance level to this first, keeping first target as our pivot line. So if it is from the initial start, if it is coming down to the downside, then we can plan a trade from this pivot line level, but I don't think so that it is gonna come back, because we have a good positive start from here. But either way, we should wait for that first 15 minutes to get that validation and confirmation to take upon a trade. So pre-market, we'll wait for that opening to happen, and we'll plan our trade accordingly. But on either way, the VIX is kind of pretty low, below 10. So option buying and nowadays selling is also like pretty difficult to do. uh, not a difficult matter, but on the premium wise, we see it is not respecting the risk we are taking. The reward is not respecting the risk we are putting in. So let's see, let's hope for the best. So with respect to the opening, we will plan our entries on this. Good morning, good morning,
Sir, good morning. I'm also an RA. Can you please share your contact details so I can contact you? Definitely. I'll share your number. You can connect me in that. Uh, which is correct for gain profit. Uh, संदीप जी, मतलब मैं ये कहूँगा आपसे, मतलब आई होप आप हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब देखो, मार्केट कहीं भी खुले, मतलब चाहे इसके ऊपर खुले नीचे खुले, पर हम अभी जो यहाँ बना रखा है वो पिवोट लेवल के हिसाब से सपोर्ट रेसिस्टेंस और अपना टारगेट वगैरह सेट कर के रखा है। तो हम हमेशा अगर इसी सेटअप के आगे से जा रहे हैं तो फिर हम इसी लेवल के ऊपर डिपेंड करके अपना एंट्री करेंगे, चाहे वो पी हो या सी हो। हम उसको अपना वॉल्यूम बेसिस पे, वॉल्यूम की सपोर्ट है तो फिर उसी डायरेक्शन पे हम ट्रेड लेगा, तो हम गेन प्रॉफिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किस साइड पे मतलब अपना ट्रेड उठा के प्रॉफिट मांगे। जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हमारा रिस्क रिवार्ड मान रहे तो फिर हम वहां अपना ट्रेड लगाए, चाहे वो लॉस हो, हमारा रिस्क कंट्रोल्ड रहेगा। पर हमारा व्यू सही है तो प्रॉफिट पे जाएंगे। मतलब हमेशा हम 1:1 रख के गया, हम डिसिप्लिनली वो फॉलो कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली हमें मतलब रिजल्ट तो आ ही जाएगा। भले आज लॉस हो, कल तो प्रॉफिट रहेगा ही पक्का। पर ये डिसीजन हम ऐसे करेगी मार्केट मूव कैसे कर रहा है उसके हिसाब से। हम्म, गणेश जी, मतलब मुझे तो बुलिश ही लग रहा है, क्योंकि मतलब ओपनिंग भी मतलब अपना ये गैप, थोड़ा गैप अप ओपनिंग है, और हमें प्रीवियस हाई भी बना रखा है, तो फिर मुझे लग रहा है इसी लेवल अगर पार हो गया तो फिर बुलिश ही रहेगा। मतलब आज मतलब एन एफ आई ए अगर देख रहे हो तो एफ आई ए के डाटा भी नेट बुलिश ही दिखा रहे हैं। अगर खुलते ही उन लोग सेल ऑफ नहीं किया तो इसके ऊपर ही रह जाएगा, मतलब पिवोट लाइन के ऊपर ही बुलिश ही क्लोजिंग भी वही होना चाहिए। अ, तो अभी तक जो भी है बुलिश बुलिश भी है मुझे भी। गुड मॉर्निंग देवेश वेंडी जी। मॉर्निंग 10 बजे तक बुल रहेगा, हाँ। मतलब स्टार्टिंग तो बुलिश स्टार्टिंग ही है। मतलब अगर जो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह, क्योंकि हमें आज एक्सपायरी है और कल भी एक्सपायरी है, क्योंकि परसों मतलब क्रिसमस की हॉलीडे है, तो फिर लगातार दो एक्सपायरी आ रहे हैं, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो फिर मतलब हम नीचे आ सकता है, अगर प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो। हिंदी में मतलब कोशिश कर रहा है भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों, मतलब मेरे को तीन लैंग्वेज हैंडल कर पाएगा, तीन ही तीन बस, हिंदी इंग्लिश और मलयालम। आयुष जी हाय। आपने व्हाट्सअप किया था मेरे को, रिप्लाई नहीं आया। आई एम सॉरी भाई, मतलब मैं रिप्लाई बहुत जल्दी कर लूंगा, आपको आज ही कर लूंगा। फर्स्ट एड वाज नॉन, फर्स्ट एड मतलब मैं समझा नहीं। हम कल ये लाइव कांटेक्ट नहीं कर पाए, मतलब कल थोड़ा टेक्निकल ग्लिच इशू आए थे उन शुरुआत पे, तो फिर इसीलिए नहीं कर पाया। तो आज हम देख लेंगे जिस हिसाब से, अगर ओपनिंग यहाँ हो रहा है, यहाँ सस्टेन इसकी, इफ इट इज सस्टेनिंग अबव दिस लेवल, देन डेफिनेटली वी कैन प्लान a trade on the bullish side, targeting our first R1, then to the R2 and R3. So I hope मतलब it has to retest the high levels, to be frank, मतलब if it is going in this way, so if we see that it is a proper gap up move from this oil level, if you see, so I definitely feel it to touch over this levels, retest on this levels in the coming days, today or tomorrow. But as it is expiring today, and tomorrow also we have expiring, then definitely I sense matlab we will get a good movement with a good premium movement also. We'll see NSC's data on pre-market opening. We can see how it is. 36 advance, Hindalco, Trend, Eicher Motors, Motor sector is kind of Bajaj Finance, Tata Motors also. So we'll open the heat map as well. Let it open and we'll focus.
If banking sector is also supporting, I feel like it should go upwardly. Like the bullish trend to be continued. We have one more minute to the market opening. We will wait. Shibuji, good morning. Thanks for मैसेज करते हो. थैंक यू जी. आप हर दिन आ जाए जैन जी. ओके सर, थैंक यू. देखो भाई, मतलब रोहित जी, मतलब आप नया हो तो फिर मैं ये कहूँगा कि ऑप्शन तो बहुत रिस्की रहता है. जैसे भी हो, हम इक्विटी से चालू कर देते हैं. जो भी हमारा कोर्स भी है, जो लिवलॉन्ग मिलते हुए, हम वहाँ भी बेसिक्स कवर करने के बाद इक्विटी से चालू करते हैं. क्योंकि मतलब इक्विटी पे हमें कैपिटल भी बहुत कम है और रिस्क भी कम है. मतलब हम सीखने का एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग स्टेप है इक्विटी से सीखना. तो फिर जब लास्ट में आ जाएगा ऑप्शंस पे हम पहुंचाते हैं, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग. इसका कारण ये है कि हम आपको जैसे ही इक्विटी से चालू करेंगे पढ़ाई सीखना ये सारे, और आपको एक बेस रहेगा, एक बेस प्लेटफॉर्म रहेगा. आपको खुद पता होगा आप मैं कैसे क्या कर रहा हूँ. तो ये इतना सारे चीज अगर समझ समझ पे आ गए तो फिर डेफिनेटली वी कैन गो फॉर ऑप्शंस. क्योंकि ऑप्शंस पे जैसे आ जाएगा, रिस्क भी हाई है, रिवार्ड भी हाई है. तो फिर हमें क्लियरली पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं. सही, बट सब सीख सकते हैं. मैं ये कह रहा हूँ सब आराम से सीख सकता है. ऐसा कोई बात नहीं है कि हम कर नहीं पाएगा. बहुत अच्छे से, मेरे से भी अच्छे से, या सबसे मतलब जो भी कितना परफेक्ट हो उससे भी ज्यादा अच्छे से सब कोई, हर कोई कर सकता है. हमारा ओपनिंग है वो ओपनिंग से ही नीचे आ रहा है. तो फिर मुझे लग रहा है मतलब फर्स्ट सेल ऑफ पीरियड हो रहा है. क्योंकि मतलब मैंने बताया आज एक्सपायरी है कल भी. तो फिर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो सकता है. बट इफ यू आर गेटिंग ए ट्रेड, मतलब अगर हमें इसी लेवल से एक बाउंस बैक अच्छे से मिल रहा है, तो फिर डेफिनेटली वी कैन गो फॉर a bullish side trade, or else we should wait for the first 15 minute. After first 15 minute, we will mark the high and low as 15-minute range. Then definitely we can plan a breakout or a breakdown. So I always feel this way that if we are getting an opportunity with respect to our view or with respect to our strategy, then definitely we can go for that. But every day that opportunity won't be coming. हर दिन हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने का. अगर नहीं मिला तो भाई लोग ट्रेड मत ले लो. ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है. जिस दिन हमें अपॉर्चुनिटी नहीं है उस दिन ट्रेडिंग अवॉइड करना भी आपका एक अच्छा स्ट्रैटेजी है. तो हम फालतू में फंस जाएगा ट्रेड पे, वी विल गेट ट्रैप्ड. So it's better if you are not getting an opportunity with respect to your view or your strategy, avoid that day taking trade. कैपिटल बच जाएगा भाई. मतलब अपॉर्चुनिटी तो हर दिन आ जाएगा फालतू में. अगर आज हम कैपिटल उसमें फंसाया तो फिर कल अपॉर्चुनिटी ही रहेगा, कैपिटल नहीं रहे. तो फिर ट्रेड अवॉइड करना भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी अगर हमारा व्यू और स्ट्रैटेजी वर्क काम नहीं कर रहे तो. आप मुझे लग रहा हो टेलीग्राम चैनल की बात करो. टेलीग्राम चैनल में ट्रेड आ ही जाएगा भाई. हमारे पास अनलिस्ट है ना, अनलिस्ट है, सब बैठे हैं. तो आ ही जाएगा जल्दी से जल्दी. अभी अभी भी मतलब हमारा व्यू के हिसाब से we are not getting an opportunity. So we will wait for either a bounce back from this level, or we will get a we will plan a rejection or a breakout trade from this level. So we will purely focus on price action as of now. So whatever discussions we had, it is based on price action. So when we are aware about all of this price action, then we can add our indicators or any other oil levels, everything on the basis which I personally add these indicators oil levels to get a proper confirmation, double assurity for whatever view or strategy I am using. So if I find a breakout, I will use an indicator to add an extra assurity. So this is, so whatever entries I am taking, it is purely based on price action only. So as of now, on entries, we will either plan an entry from this
either if it touches either of the levels, so we'll plan with respect to how the market is behaving. So I will just change it to indices and see which all is moving better. Coal India today almost 5 rupees up 1.5 percentage. I changed again. Yeah, Tata Steel. Bajaj Hindalco, JW Steel Wheel. Tata Steel 169. Let's see the heat map it is supporting. So IT sector is pretty down for the day. If you see IT sector, ITC, not ITC, Hindalco, Bajaj. Yeah, TCS, Tech Mahindra, Infosys, everything was pretty down today. So it will be pretty lagging because the whole IT sector is on reddish color. And if you see on the banking sector, ICIC is also on red. So I find the first initial time period it will be kind of bearish or consolidating, and we will wait for the right entry to happen either from this level, or if it is breaking down, or either on this level. So we will plan the trades accordingly. So as of now, we should wait and अरविंद जी सर ECM में 9950 गुड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। 9950 मतलब एक देखो, यूजुअली हम मतलब इंट्राडे की इक्विटी ट्रेड्स उठाते हो। नाइन नाइन ई एम ए 9 और 50 और 9 और 15 का 15 या 20 का क्रॉस ओवर लेके हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं। उसमें हम मतलब रुपये के हिसाब से अगर देख रहे हो तो 3 to 4 5 रुपीज ही मिलता है। बट प्रॉपरली पोजीशन साइज कर रहे हो तो हमें 2 to 3% आराम से इंट्राडे ट्रेड पे मिल जाता है ईएमए क्रॉस ओवर। पर मैं निफ्टी इंडेक्स में ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करता। मैं ईएमए क्रॉस ओवर यूजुअली मतलब हमारा इंट्राडे इक्विटी करने में इस्तेमाल कर देता हूँ। और उसके लिए भी हम देखो स्ट्रैटेजी जो भी चाहे जितना भी स्ट्रैटेजी है हम सीख लो, पर हमें ये भी पता होना चाहिए वो स्ट्रैटेजी कहाँ लगाना है। मतलब देखो मतलब सिलेक्शन, अगर स्टॉक इंट्राडे हो, स्विंग हो, लॉन्ग टाइम हो, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करूंगा। ये सिलेक्शन ऑफ स्टॉक हमारा अच्छा है तो फिर जो भी स्ट्रैटेजी उसमें हम इस्तेमाल करेगा वो आधा हम जीत चुकी होगी। पर गलत स्टॉक उठाए तो पर चाहे कितना भी खतरनाक स्ट्रैटेजी हो, नहीं काम नहीं करेगा। बस उतना ही है। ईएमए क्रॉसओवर मैं इंट्राडे पे यूज करते हैं मतलब उसका कलेक्शन ऑफ स्टॉक भी अच्छा होना चाहिए तभी हमारा स्ट्रैटेजी अच्छे से काम करेगा। बस मतलब अगर ऑप्शंस पे भी है हमें स्ट्रैटेजी है पर प्रॉपरली हम सही स्ट्राइक प्राइस पे खरीदना पड़ता है। आईटीएम हो एटीएम हो, हमें स्ट्राइक अगर सही है तो फिर हमारा स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी वो अच्छा चलेगा। अभी भी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, बस यही है कि हमारा ये आईटी सेक्टर खींच रहा होगा। एंड अबाउट दिस bank nifty sector also, if you see that it is not as good as it should be. So if you see that the movement is kind of happening, but India VIX is as low as below 10 and it is not letting the premium. We are not satisfied with the premium movement is happened. Maximum 10 15 points if it is moving on a good basis on ATM at the money or in the money. But anything other than that it is pretty lagging and it's always trapping. हर दिन हमें फंसा रहा है, मतलब प्रीमियम इतना मूव ही नहीं कर रहा है। अगर यहाँ भी देख रहे हो तो क्या बढ़िया गैप अप ओपनिंग है, सारे बढ़िया, पर उसी दिन यही मतलब लाइन पे ही
बस इसी लेवल पे ही मतलब घूमते रहा। जो प्रीमियम डीके भी हो जाएगा, आज तो एक्सपायरी भी है, तो फिर इसीलिए हमें केयरफुली एंट्री लेना पड़ता है। तो मॉर्निंग में मतलब हम अगर बेयरिश मूवमेंट अगर हमें लग रहा है, तो फिर मतलब मॉर्निंग मोमेंटम थोड़ा अच्छा है। थोड़ा थोड़ा सा मतलब हमें ये है कि अ, हमें 10 15 या 20 पॉइंट्स तक प्रीमियम मिल जाए। हम इंडिगो न्यूज़ पे आते, इंडिगो एक बार देखते हैं इंडिगो कैसे चल रहा है अभी, क्योंकि मतलब वो फ्लाइट पायलट की इश्यू आके मतलब थोड़ा नीचे तो गया था वो। 15 मिनट हटा के वन डे। इंडिगो एक वैसी प्रकार ही लिया अभी। इसी लेवल के ऊपर बुलिश होना चाहिए। इंडिगो तो ऊपर आ ही जाएगा, क्योंकि मतलब सी न्यूज़ बेस्ड मूव था ये पूरा। तो फिर अगर ऊपर आना ही चाहिए इंडिगो। तो we'll wait, we'll focus this on। जब अच्छा ब्रेकआउट कुछ मिल जाए हम डिस्कस कर लेंगे। ग्रासिम सिप्ला कोल इंडिया अभी भी एक बार। तो कोल इंडिया 2% भाग गया अभी। ये सेक्टर पूरा बढ़िया चल रहा है, कोल इंडिया वीएलसी कोल इंडिया। बढ़िया भाग रहा है कोल इंडिया। पर ये आगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्रॉपर, बट अगर ये सस्टेन कर रहा है तो फिर बढ़िया मोमेंट होगा। निफ्टी कुछ मूवमेंट दी। इनिशियल टाइम पीरियड पे जो मोमेंटम ट्रेड्स करने वाले हैं, जो थोड़ा रिस्की भी है, बट उसी टाइम पे मतलब जब विक्स इतना नीचे है मोमेंटम ट्रेडिंग अच्छा रहता है। तो फिर अभी भी हमारा लेवल्स पे टच नहीं कर रखा हो, तो हम तो इसके बिना अभी एंट्री थोड़ा मुश्किल ही है अभी, मतलब विदाउट टचिंग एनी ऑफ द लेवल्स वी कैन नॉट प्लान एन एंट्री ओवर हियर। So anyway, you can plan your entries with respect to the levels given. So if it is consolidating, so like I said, the best strategy is to avoid rapid trades. Like so, if you are not having a proper entry with respect to your strategy or your view, then definitely avoid the day. So keep this in mind that today is an expiry and tomorrow is an expiry. So profit book might be happening. So just be properly manage your risk management and be cautious in your trading. And I'll wind up for the day, guys. We will meet again tomorrow soon. And thank you so much. Thank you, everyone.